नमस्कार स्टूडेंट्स इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत पे आजिकार क्लास आपण गुरुत्वपूर्ण क्लास रमती कि फर्स्ट क्लास गोटे करी आपर से क्लास रे आपण मानकर जो एफर्ट देखी किंतु आज ये क्लास आम कंप्यूटर करवा कंप्यूटर क्लास नंबर फर्स्ट जोटा कि सही क्लास रे कंप्यूटर गोटे क्लास आम समस्त एमसीक्यू सॉल्व करवा जमती कि आपंकर एटीओ मेन एग्जामिनेशन हबार अच्छी आपंकर सेप्टेम्बर मासर एग्जामिनेशन अच्छी अल्प डे अच्छी तेणु ओनली एमसीक्यूज उपर को एमसीक्यूज विथ आंसर आपन सहित मुझे चर्चा करी निश्चित भाव फर्स्ट क्लास इंग्लिश रहा आज ये क्लास आम कंप्यूटर उपर चर्चा करा एमती आपंकर 11 आपंकर 10 ରୁ 11टा क्लास रही सब क्लास रे आम सब क्वेश्चन को कवर करने चेष्टा करवा निश्चित भाव आज क्लास इंपोर्टेंट रहिबो बहुत लंबा क्वेश्चन प्रोसीडिंग बहुत लंबा अच्छी तेणु क्लासेस रे क्वेश्चन विथ आंसर आम आलोचना करवा देखो कंप्यूटर क्लास 2 रे कंप्यूटर रे चर्चा रे आम आगू बढ़िया लेट करवानी किसी चर्चा ऊपर को देखा जे फर्स्ट क्वेश्चन कौन ता सहित मुझे कही रखी जो मैंने वीडियो को लाइक करना लाइक गोटे कर दिंतु और शेयर करिया सह सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल को जो मैंने पेड सब्सक्रिप्शन नवाक चाहूँगी कमेंट सेक्शन में जातु मत मोर नंबर पाइबे से आपने कॉल करेंगे नो वरी अबाउट दैट आप कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर पाइबे से फोन करूँ आपको समस्त क्यूरी सल्व हो पेड सब्सक्रिप्शन में कौन कौन समस्त जिन मिलूँ एवेलेबल होको जना पड़ तो फर्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन ए कंप्यूटर तो कंप्यूटर सीपीयू रे प्राइमरी फंक्शन आपंकर एक्जिक्यूट करवा इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट करवा प्राइमरी फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सी कौन कहला आपनकर सीपीयू को जोटा कि आपनकर सीपीयू रो को पार्ट बा को कंपोनेंट अरिथमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशंस करता है सी होची एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन मु पूरा फुल फॉर्म सहित समस्त जिन लिखि देछि जदि भी आपनको केबे फुल फॉर्म पचाए एएलयू रो ताहले आपण माने निश्चित भाବରେ यार उत्तर दे परिबे व्हाट डज मीन टर्म क्लॉक स्पीड रेफर टू इन ए सीपीयू सीपीयू रे आपनकर क्लॉक स्पीड रो अर्थ कोन क्लॉक स्पीड आमे कहा को कहिताउ आमे माने द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच सीपीयू एक्जिक्यूट इंस्ट्रक्शन आपन जो स्पीड रे बा जो फ्रीक्वेंसी रे आपन सीपीयू आपनकर इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट करता है दैट इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपीयूज कैच मेमोरी तो आप कौन कहला सीपीयू रो कैच मेमोरी रो उद्देश्य कौन सी कौन करता है टू इनक्रीज द स्पीड ऑफ डाटा एसएस डाटा को एसएस करिवारे सी होची तार स्पीड को इनक्रीज करिवारे आपन कैच मेमोरी आपन हेल्प करता है एसएस मींस आपन रिसीव करिवारे प्रोसेस करिवारे जेमति भाबे आपन नै पानते नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आसिला व्हिच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्जिक्यूटेड तो आपनकर कौन कहला कौ रजिस्टरटा आपण मानकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट करने एड्रेस करता है रजिस्टरटा होल्ड कर रखी जे या पर आउट एक्जिक्यूशन आसीबो या पर आउट डाटा आसीबो मु ताको एक्जिक्यूट करिवि बा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जोटा आसीबो ताको आमे कोन कहिथाउ प्रोग्राम काउंटर दैट मीन्स बी इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर तो आपनकर कौन कहला कंप्यूटर रे आमे रैम रो फुल फॉर्म कहा को कौन कहिथाउ आमे रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट मीन्स योर आंसर विल बी बी हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन ए सीपीयू आप सीपीयू रे जो कंट्रोल यूनिट रही तार मेन फंक्शन आपनकर कौन हो डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द एएलयू एंड अदर कंपोनेंट्स आपनकर एएलयू ता सहित अदर कंपोनेंट रो समस्त ऑपरेशन को डायरेक्ट करवा डायरेक्शन दबा ताको कंट्रोल करवा दिस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन आसिला व्हिच टाइप ऑफ ए मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम समस्त कथा गोटे जगह कहीदेला आपन को नॉन वोलेटाइल हेतिबो ता सहित इलेक्ट्रिकली आपन को इरेज हेजिबो ता सहित रिप्रोग्राम मध्ये होई परिबो सेही प्रकार मेमोरी को हमें फ्लैश मेमोरी कहिताउ निश्चित भाव में क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहिबो मन रखिथिबे परवर्ती क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बस इन ए कंप्यूटर सिस्टम रे बस रो आपन मानकर उद्देश्य कोन तार काम होची आपनकर फैसिलिटेट करिवे कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स आपनकर दुईटा कंपोनेंट भितरे से ब्रिज रो काम करता है कम्युनिकेट करिवार काम करता है दैट मीन्स आपनकर माउस हे गला ता सहित आपन सिस्टम हे गला बा कीबोर्ड हे गला बा आपन जेटा मुडा हार्डवेयर कथा कहली सेही भले सिस्टम रहइबो बस होची कंप्यूटर सिस्टम रे पर्पस करता है गुटे आपनकर ब्रिज भलिया काम करिया पय नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हाट इज ए वर्ड इन ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर आर्किटेक्चर रे वर्ड को हमें कौन कही था यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज ये यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज को हमें वर्ड रो जोटा कि आपन फॉर्म देखि पारुचंती से फॉर्मटा को हमें कौन कही था यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज ये क्वेश्चन समस्त गुरुत्वपूर्ण हेबो कंपाइल करके क्वेश्चन नि आसीची नेक्स्ट क्वेश्चन सिला व्हिच मेमोरी टाइप इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू देखो सीपीयू माध्यम जो डाटा आपको टेम्परेरी स्टोरेज रे रही है प्रोसेस कर आम से स्टोरेज को कौन कही था रैम कही था रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हाट डज वोलेटाइल मेमोरी मीन आपनकर वोलेटाइल मेमोरी रो अर्थ कौन से पचाला से अर्थ होची मेमोरी दैट लॉजेस
loses its content when power loss जदि आपनकर पावर लॉस हो जाउची करंट चली जाउची ताहाले निश्चित भाव में आपण मानकर डाटा लॉस होइबो दिस इज दैट मीन्स volatile माने भूली जीवो गुटे प्रकार आपण एमतिया मन रखि पारंती नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हिच टाइप ऑफ बस कनेक्ट्स द सीपीयू टू द मेन मेमोरी आपण कोन कहला आपण मानकर बस जोटा सीपीयू रो मेन मेमोरी रे बस को कनेक्ट करथुवा डिवाइसेस रो नाम कोन बा तार जो टाइप नाम कोन कहि परिबे आपण सेटा हैला एड्रेस बस नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आपनकर स्टैक पॉइंट रजिस्टर रो आपण मानकर रोल कोन तार काम टू पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इन मेमोरी आपण मेमोरी रो जो स्टैक रहिता है ताको पॉइंट आउट करबा दैट इज वर्क ऑफ स्टैक पॉइंटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी रो काम कोन मेमोरी आपनकर सिस्टम दैट एक्सटेंड फिजिकल मेमोरी यूजिंग डिस्क स्पेस आपनकर डिस्क स्पेस को व्यवहार करिकि आपनकर फिजिकल मेमोरी को इंक्रीज करबा दैट इज द वर्क ऑफ वर्चुअल मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीपीयू व्हाट डज पाइपलाइनिंग रिफर टू आपनकर जो सीपीयू रो कंटेक्स्ट रे आपनकर पाइपलाइनिंग गुटे वर्ड आसितै पाइपलाइनिंग रो अर्थ होची आपनकर ब्रेकिंग डाउन इंस्ट्रक्शन इनटू स्टेज एस फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन निश्चित भाव समांतर भाव में आपनकर कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करिया पई ताकू पैरेलली कोन करियो ब्रेक डाउन करिवो समस्त जिंस को छोट छोट पार्ट रे ब्रेक डाउन करियो दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग को जायते निश्चित भाव समस्त क्वेश्चन को मन रखुथिबे व्हाट डज इनपुट स्टैंड्स फॉर इन ए कंप्यूटर सिस्टम रे आपनकर इनपुट आपनकर जेटा इनपुट लिखाई छि एटा को आपन कोन कहती इनपुट बा आउटपुट कही था ये आपंकर जेग्निश आपको जब लेखा रही है ताने इनपुट बा आउटपुट या आम स्टैंड करता से भाई आसला व्हिच कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू हैंडल्स द डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन आपंकर ये कंपोनेंट रे सीपीयू कौन करता है सीपीयू रे कौन आपंकर कौन जिनटा आपंकर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है डिकोड करने काम आपंकर कंट्रोल यूनिट रो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस फार्मवेयर निश्चित भाव में क्वेश्चन को मन रखिए जो बायोस फार्मवेयर रे को प्रकार मेमोरी यूज होता है रोम यूज होता है बायोस है कौन बायोस फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जनातु समस्ते जानिथिबे जोटा कि आपको ये कही देता किंतु आप कमेंट सेक्शन जनइले भल हम व्हाट डज डीएमए स्टैंड इन ए कंप्यूटर सिस्टम डीएमए आप कंप्यूटर सिस्टम रे कौन कही आम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रो फंक्शन होची टू फैसिलिटेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी आपन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ता सहित मेमोरी सहित ये आपनकर कोन करिवो कम्युनिकेट करता है दैट इज द वर्क ऑफ डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट इन ए टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम अपन टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम रे आपनकर जो फास्टेस्ट मेमोरी को प्रकार मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी कहि थाउ दैट इज कैश मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला देखंतु व्हाट डज द टर्म बस विथ रिफर टू आपनकर बर्ड्स आप बस पढ़ी के आसिले किंतु बर्ड्स विथ क्या कही थे आम तार टर्मटा क्या रिफर करता है द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इन द बस आपनकर बस रे जतिक नंबर ऑफ डाटा लाइन थाए दैट इज कॉल्ड बस विथ नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग कंप्यूटेशन कहते कंप्यूटेशन करछन सेते बेले आपनकर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करथाय जो रजिस्टर ताको आमे को प्रकार रजिस्टर कहथाउ एक्यूमुलेटर बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा व्हाट डज राइस स्टैंड फॉर इन ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप राइस रो स्टैंड आप कौन हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आम राइस को क्या अर्थ बुझी था रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन जोटा कि सेट कंप्यूटर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर दिस द फुल फॉर्म ऑफ राइस नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइस आर्किटेक्चर कौन होची कैरेक्टरिस्टिक रही ये रोचे आपनकर सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल रे आपनकर कौन सी भी इंस्ट्रक्शन को से एग्जीक्यूट करिवो दैट इज द वर्क ऑफ राइस दैट मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर निश्चित भाव समस्त क्वेश्चन गुरुत्वपूर्ण रहिबो व्हाट इज CISC एन एक्रोनॉमी फॉर आपनकर CISC एक्रोनॉमी कहा को आपन डिनोमिनेशन करूची ये होची आपनकर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर दैट मीन्स A इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज केस कोहेरेंसी refer to in मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जिते आपनकर केस कोहेरेंसी आपन करछंती ना सेटा अछि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम रे केस कोहेरेंसी कहा को आपन बुझैता बा कहा को रिफर करता है ये करता है आपनकर ensuring that all cache have consistent data next question in computer architecture what does the term addressing mode refer to आपन addressing mode रे आपन computer architecture रे आपन addressing mode ता कहा को refer करता है that is refer the method of assessing memory location को assess करता है next question आसिला what is the primary role for the
ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्राइमरी रोल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रो प्राइमरी रोल कोन रहिबो एथिरे आपनको रोल रहिबो टू स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड दैट मींस ए इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए लोअर एसएस टाइम देन RAM बट हायर कॉस्ट पर बिट दैट इज ASRAM निश्चित हारे समस्त रखिबे ASRAM DRAM आसीबो आगो क्वेश्चन आसीची नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा व्हाट डज fetch execute cycle refer to in CPU operation आपन को execute cycle CPU operation ले कहा को रिफर करता है ये रिफर करता है the sequence of fetching instruction from memory and executing them next question जिबा next question आसिला which unit of the CPU is responsible for controlling the execution of instruction the controlling of the execution of instruction that is answer B controls unit CU next question आसिला What does the term bus arbitration refer to आपनकर bus arbitration कहा को रिफर करता है ये रिफर करता है आपनकर controlling access to the bus when multiple device request it that means answer is B next question आसिला which register keeps track of the address where the next instruction is located that is program commuter that means A is your answer next question which is what is memory segmentation कहा को कह जाता है organizing करिवा memory into distinct segment for different purposes निश्चित भाव रे different purpose पाई आपनकर मेमोरी को ऑर्गेनाइज करबा दैट इज द वर्क ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी इनटू डिफरेंट सेगमेंटेशन पढिले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आसे व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज टिपिकली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज आपनकर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज पाई में हार्ड डिस्क रे व्यवहार करते सिंपल कथा समझते जानछथि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैला इंटरनल हार्ड डिस्क हैला आपनकर लॉन्ग टर्म डाटा पाई आपनकर हार्ड डिस्क रे व्यवहार कर देता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल दैट मींस ARP कंप्यूटर नेटवर्क रे आपनकर जो ARP रो काम कोन तार उद्देश्य कोन एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल तार फुल फॉर्म टू रिजॉल्व IP एड्रेस टू फिजिकल मैक एड्रेस निश्चित भाव रे IP एड्रेस को आपण फिजिकल मैक एड्रेस रे कन्वर्ट करबा दैट इज द वर्क ऑफ ARP नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा which of the following is not a function of the operating system in computer organization ले कोनटा उटे आपनकर जोटा कि फंक्शन नुहे सी होची आपनकर डी हे जो परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज सिस्टम बस रिफर्स आपन सिस्टम बस रिफर कहा को करता है रिफर करबा आपनकर द कंट्रोल पाथ दैट कनेक्ट्स द CPU मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट क्वेश्चन which type of memory is used for temporary data storage and it is fast but volatile आपनकर टेम्पररी डाटा स्टोरेज करता है किंतु बहुत अधिक जल्दी करता है किंतु वोलेटाइल होता है वोलेटाइल दैट मींस भूली जाता है दैट मींस आपनकर आंसर इगला कैश मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट डज द टर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिफर टू ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आंसर इंटरफेसिंग विथ एक्सटर्नल डिवाइसेस फॉर डाटा एक्सचेंज नेक्स्ट क्वेश्चन which CPU register is used to store the result of arithmetic and logical operations that is accumulation हमें पढ़ी के सिलेबे नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज बूटिंग कहा को कह जाता है हमें बूटिंग को होता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑन करबा ता सहित ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करबा दैट इज द वर्क ऑफ बूटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which of the following component is not typically part of the CPU रो कोटा गुटे पार्ट नुहे टिपिकल पार्ट नुहे दैट इज आपनकर NIC जेटा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहितबा NIC कार्ड कहितबा हमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड्रेस बस इन कंप्यूटर सिस्टम आपन एड्रेस बस रो काम कंप्यूटर सिस्टम रे टू कैरी द एड्रेस फ्रॉम द डाटा बीइंग एक्सेस आपनकर एड्रेस को कैरी करता जोठी आपनकर डाटा को एक्सेस करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन which component is responsible for managing the computer memory hierarchy आपनकर कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की को मैनेज करिया पई को प्रकार कंपोनेंट्स रिस्पांसिबल रहिता है से होची MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट समस्त जिंस को मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त व्हाट डज बस विड्थ डिटरमाइन इन ए कंप्यूटर सिस्टम बस विड्थ आपनकर कंप्यूटर सिस्टम रे डिटरमाइन करता है द अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट वंस आपनकर उत्तर सी हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which of the following is an example of secondary storage device एमान को दरु secondary storage रे आपनकर हार्ड डिस्क आसीबो हार्ड डिस्क ड्राइव नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट डज मल्टी प्रोसेसिंग रिफर टू मल्टी प्रोसेसिंग हमें कहा को रिफर करथाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर नेक्स्ट आपनकर आंसर आसी गला ए यूजिंग मल्टीपल CPU टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली निश्चित भाव में साइमल्टेनियसली आपण माने जति कौन सी प्रकार डिफरेंट टास्क को आपण मल्टीपल CPU माध्यम रे करछन दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन छी देखिबा
Which type of computer architecture is characterized by having a large number of general purpose registers and a small number of addressing mode? आपण मानकर राइस हे जीव राइस हमें पढ़ी के आस्तिले पूर्वरु राइस एमआई समस्त पढ़ी. What does the term bus bandwidth refers to? bus bandwidth कहा को रिफर करता है? हमें रिफर करता हूँ the total amount of data that can be transmitted over the bus in a given time. Next question jiba. Which register in the CPU is used to temporarily hold the current instruction being executed? That is आपनकर instruction register. Next question. What is the purpose of the system clock in a computer? System clock computer रे हमें कहा को नहीं था to regulate the timing of CPU operation. Next question. What does pipeline hazard refer to in pipeline CPU architecture? पाइपलाइन hazard हमें पाइपलाइन CPU आर्किटेक्चर रे कहा को रिफर करता हूँ द डिले caused by the instruction needing to wait for data from previous instruction. That means A is your answer. Next question. Which of the following describes write through cache policy? Write through cache policy कहा को हमें कहता हूँ write data to cache and the main memory simultaneously. Next question. In computer system what does swapping refers to? आपन swapping हमें कंप्यूटर रे कहा को व्यवहार करता हूँ a transferring of data between physical memory to disk storage. physical memory to disk storage को आपण को डाटा शेयरिंग करिबा डाटा ट्रांसफर करिबा को हमें कोन कहता हूँ swapping. Next question. Which of the following is a technique used to increase CPU performance by executing multiple instructions in parallel? That is pipelining. हमें ଏବେ पढ़ी आस्तिलु. What is phase in the context of the phase execute cycle? That is A is your answer. The process of retrieving the next instruction from memory. Next question. Which type of memory is used to store system firmware and is not typically user modifiable? That is ROM. Random आपन ऐसा मेमोरी आपन RAM हे गला किंतु ये होची रीड ओनली मेमोरी. बी आपन उत्तर हे जिवो रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन असला व्हाट डज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग अलाउ ए सीपीयू टू डू? सीपीयू कोन करिवो? एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट वंस बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्टेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीपीयू परफॉर्मेंस मैट्रिक? सीपीयू परफॉर्मेंस मैट्रिक को हमें क्लॉक स्पीड माध्यम रे डिफाइन करता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. What is the main purpose of a memory management unit? memory management unit रो मुख्य उद्देश्य रहिबो to manage and translate memory address. B is your answer. Next question. What does bus contention refer to? bus contention refer करिवो कहा को conflicts arising when multiple devices attempt to use the bus simultaneously. A is your answer. Next question. Which of the following is true about static RAM? SRAM हमें पढ़ी आस्तिलु. DRAM SRAM हमें पढ़ुचे तेणु ये हो आपन इट इज ए फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक RAM. दैट मीन्स DRAM. नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला. व्हाट इज स्पूलिंग? स्पूलिंग आपनकर OS रे ऑपरेटिंग सिस्टम रे स्पूलिंग हमें कहा कहता हूं द टेक्निक ऑफ स्टोरिंग प्रिंट जॉब्स इन ए क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला. व्हिच आर्किटेक्चर फीचर अलाउ ए CPU टू एग्जीक्यूट multiple instruction at the same time? That is single instruction multiple data. That is SIMD कहता हूं हमें. B is your answer. Next question. In computer architecture what is trap? trap हमें कहा कहता हूँ trap होचे आपण मानकर ये होचे an exception or interrupt triggered by the software or hardware. A is your answer. Next question. Which of the following describe cache coherence in multiprocessor system? cache coherence multiprocessor system रे हमें कहा कहता हूँ ये ensure करता है that all processors see a consistent view of memory. A is your answer. Next question. What is the purpose of the control bus? आपनकर बस कंट्रोल बस रो आपनकर पर्पस रही था जे टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ले व्हाट डज बस विड्थ डिटरमाइन द कंप्यूटर सिस्टम? बस विड्थ आपण मानकर ये होची द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली. सी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन? आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ए एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन इन ए डिफरेंट ऑर्डर देन दे अपीयर इन द कोड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस. दैट इज ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is used to extend the addressable memory space of a CPU? addressable memory space of a CPU रो आपण मानकर जोटा कि एग्जांपल कोन हे जिवो ये एड्रेस बस आपनकर ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कंप्यूटर सिस्टम व्हाट डज एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई? एड्रेसिंग मोड आपनकर कोन स्पेसिफाई करता है? द मेथड ऑफ एक्सेसिंग डाटा में फ्रॉम मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of memory is used to store data that is frequently accessed by the CPU? That is SRAM. SRAM निश्चित भारे कथा को मन रखिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
what is the purpose of interrupt handling in computer system? Interrupt handling computer system रे हमें कहा कौन कोई था to respond to external events or signal of by pausing the current process. Next question asila, which of the following is not a type of memory hierarchy in computer system? That is external storage. D is your answer. Next question, what is address space in context of memory management? Address space हमें memory management रे कौन context को अपन define करता है? The range of address that process or system can use to access memory. Next question, which component is responsible for translating virtual address by physical address? Virtual address by physical address, that is MMU, memory management unit. Next question, what is dynamic RAM? DRAM বা dynamic RAM आपनकर कोन? A type of RAM that is requires constant refreshing to retain data. Constantly से refresh करता है तार डाटा को retain करिया पाई. Next question आसिला, which of the following technique is used to reduce latency in memory access? आपनकर latency memory रे आपनकर जो memory access रे जो latency को reduce करिया पाई को प्रकार टेक्निक रे व्यवहार करता हो? That is catching को जाता हमें. B is your answer. Next question, what is multi-programming referred into in a operating system? Multi-programming हमें कहा कोई तो running multiple program in a single CPU by switching between them. निश्चित भाव रे ए आपन उत्तर. Next question आसिला, which CPU component is responsible for fetching, decoding and executing instruction? That is control unit रो काम. आपन मान को B उत्तर हो जिवो. Next question आसिला, what is the purpose of hardware interrupts? Hardware interrupt रो purpose कोन हो जिवो? तो ये होबो to handle events generated by hardware device that require immediate attention. Next question jiba, what does virtual memory allow a computer to do? Virtual memory कौन करता है कंप्यूटर को? Extend the value available memory by using portion of the hard drive. Next question, which type of memory provides the fastest access speed of the CPU? That is cache memory. Next question, in computer architecture, what is data hazard? Data hazard is a situation where instructions that are executed in parallel may produce incorrect result due to data dependency. Next question jiba, what is the function of register in a CPU? CPU रे आपन को register रो function हला to hold data temporarily for processing. Next question, which type of cache policy writes data to the cache only? That is write back. B is your answer. What does data transfer rate refers to? Data transfer rate refer करिवो the speed at which data is moved from one location to another. Next question आसिला, what is the function of arithmetic logic unit in CPU? CPU रे आपनकर ALU रो function to perform arithmetic and logical operation. Next question, in computer, what is memory paging? Memory paging हमें कहा कोई तो a memory management scheme that divides memory into fixed size blocks called pages. Next question, which component help to handle memory management in a computer system? Computer system रे handle करिवा memory management को कहार काम ये होची NIC कार काम, सॉरी आपन को memory management रो काम MMU आपन को बी उत्तर है जो NIC नुए भूल कहली. What does direct memory access? आपन DMA कौन करता है? DMA करता है काम a method that allow peripheral to access memory without CPU intervention. ये is your answer. Next question, which type of memory is used to store system boot codes? ये होची आपन को ROM है जो read only memory. Next question, what does context switching कहा को हमें व्यवहार करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रे? The process of saving and loading the state of process to allow multitasking, that is called switching. Next question, which component in computer system manage data challenges between CPU and external devices? Upon data challenge है input or output controller. Next question, what is the function of a volatile memory? Volatile memory function to temporarily store the data is lost when power is turned off. Power बंद हो गले मतलब डाटा को स्टोर करके टेम्परेरी रखिबो, that is the work of volatile memory. Next question आसिला, what does the performance bottleneck refer to in computer system? अपन मानकर performance bottleneck, ये जो bottleneck कहूची performance bottleneck हमें कहा को refer करता हूँ? ये refer करता हूँ a component or process that limits overall system performance. Next question, which of the following is an example of system software? Windows 10 अपन को software question आसिला, OS question आसिला बे. What is the primary purpose of the operating system? Operating system primary purpose to manage hardware resources and provide a user interface. Next question, which type of software is used to perform a specific task for the user such as word processing or web browsing, that is the application software বা app जोटा कहि तो हमें. Next question जिबा,
which programming language is primarily used for web development on the client side, that is javascript. C आपन उत्तर हो जिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does open source software means? open source software रो अर्थ कोन? software that is free to use and can be modified by anyone. नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला, which software development model involves a iterative development of software product with continuous feedback, that is the answer of agile model. agile model निश्चित भारे important question होइबो. what is the function of compiler in a software development? compiler software development रे compiler रो आपन function हला to translate high level language code into machine level language. आपन high level language को आपन machine level language code रे convert करिबो, that is the work of compiler. interpreter compiler समस्त मने रखिबे. next question बढ़िबा, which type of software is designed to help users performance tasks such as creating presentation or spread heads, that is the application software. C is your answer. next question, what does the acronym IDE stands for? IDE stands for आपण मानकर integrated development environment. A is your answer. next question, which of the following is an example of relational database management system? RDBMS, that is the Oracle database. निश्चित भारे समस्त क्वेश्चन मन रखुथिबे. what is debugging in the context of software development? आपन को debugging आमे कहा को कहिताउ? the process of finding and fixing errors in the code. next question, which of the following is an example of a version control system? that is Git. Git is a version control system. next question, what does API stands for in software development? API application programming interface, that is A is your answer. next question, which software tool is used to create and edit vector graphics? vector graphic पई आपनकर Adobe Illustrator हमें व्यवहार करथाउ. which type of software license allow users to freely use, modify and distribute the software? that is open source license. next question, what is the purpose of database management system? DBMS, that is to store, manage and retrieve data. next question, which of the following is an example of integrated development environment? IDE for Python, that is the answer of PyCharm. PyCharm आपनको उत्तर A ही जीवो. next question जीवा, what does software as a service SaaS means? SaaS means रो कोन हो जीवो? software as a service तार अर्थ होची आपनकर software that is hosted in the cloud and accessed via internet. निश्चित भारे गोटे कथाटी आपनको कहिबी, यही समस्त जिनस आप वर्ड टे कम्प्लिकेटेड लगुत कहीं कॉमन कंप्यूटर आपंकर नुहे. कंप्यूटर जो बेसिक आम पढ़ी ना प्राइमरी आपंकर प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन पाई, तो से क्वेश्चन समस्त ये ना ये सब क्वेश्चन डिफरेंट होती. यार डिटेलिंग आपको कौन करें आपको नोट्स पढ़ा पड़ो. नोट्स केवल पेड सब्सक्रिप्शन मिलूँ. ये समस्त डिटेलिंग ऑलरेडी अवेलेबल होती. जदि आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ना निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन को जातु, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं नियंतु जल्दी जल्दी. बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन सी देखा, which of the following is a common version control system used in collaborative software development? collaborative software development रे आपन को Git होची common version control system. next question जिबा, what is the primary role of a software framework? software framework रो primary role रहिला to provide a structured environment and reusable code for software development. next question जिबा, which of the function of the middleware in software system? middleware software system रो जोटा function रहइबो to act as a intermediary layer that facilitated communication between different software components. next question, which of the following is an example of an open source web server software? that is Apache HTTP server. next question is, which type of software is used to manage and optimize the performance of a computer system? that is system utilities. next question, what does cloud computing refer to? cloud computing refer करिवो कहाकू? the delivery of computing service over the internet. next question, which of the following is a key benefit of the content management system? CMS, that is A is your answer. it allows user to create, manage and modify digital content easily. CMS आपन को व्यवहार करता थी. what is software patching? software patching कौन करबा? ये होची the process of updating software to fix bug and vulnerabilities. निश्चित भाव में ए जो उत्तर, which tool is commonly used for project management in software development? that is Jira में व्यवहार करते हो. next question जीवा, what does machine learning involve? machine learning रे हमें कौन involve करता हो? आपन को the use of algorithms, statistical models to enable computer to learn from data. next question, what is the primary function of a software library? आपनकर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रे आपनकर प्राइमरी फंक्शन कोन होइता है? दैट इज द टू प्रोवाइड रीयूजेबल कोड फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क.
Next question, which of the following is a common programming paradigm that focus on the use of the object and classes, that is OOP कहते हो हमें object oriented programming. Next question, what does DevOps aim to achieve in software development, that is improved collaboration and integration between development and operation teams. Next question, what refactoring in software development, आपनकर what is the refactoring आमे कहा कोई था software development रे ये होची the process of restructuring existing code without changing its external behavior. आपन उत्तर रही जिवो ए. Next question jiba, which term describes the practice of running multiple instances of an application or service in isolated environment, that is containerization. आपन उत्तर बी ही जिवो. Next question jiba, what is software deployment? Software deployment, the process installing, configuring software for use in a production environment. आपन उत्तर ए ही जिवो. Next question jiba, which tool is used for continuous integration and continuous deployment? CI और CD हमें जेकिन्स रे कहि थाउ, जेकिन्स व्यवहार करता हूँ, जीरा जेकिन्स ए शब्द गिट ए समस्त मन रखिथिबे. What does version control manage in software development? That is the change to source code over time. Next question, which of the following is an example of high level programming language? High level programming language Python गोटे high level programming language. Next question, what is the role of software documentation? Software documentation रो role कोन? To provide detailed information about software functionality, uses and maintenance. अपन उत्तर कौन है गला? ए है गला. Next question, which of the following is an example of a graphical interface GUI toolkit? GUI toolkit रो example अपन Qt ही जिवो. Next question जिबा, what is the software testing designed to identify? अपन software testing अपन को identify करिया पे कौन यूज करता है? Bugs and defects in software application. Which term refers to a software product ability to operate across different platform or environment, that is portability. Next question asila, what is source code? अपना source code कहा कोई था में the human readable instruction written by programs. Next question, which following is an example, is an common type of software license that allow for free redistribution and modification, that is अपन करो GPL हमें कोई था GPL GNU बा अपन को GPL कोई था जोड़ा कि general public license. Next question जिबा, what does software optimization aim to improve? Software optimization improve करिया पाई the performance and efficiency of a software application. ए अपन को आंसर ही जिबो. Next question, which concept involves writing code in a way that modular and reusable, that is code reusability. Next question, what is software maintenance? The process of updating and improving software after its initial release. Next question, which program paradigm emphasizes the uses of function and immutable data, that is functional programming. Next question, what is the purpose of a software framework? Software framework ro purpose है to provide predefined structure for developing software application. Next question, what does user experience UX refer to in software design? That is आपनकर आंसर है जिवो the overall experience and satisfaction of users interacting with the software. Which of the following is a common software tool for database management and manipulation, that is SQL Server. Next question, what is software scalability? Software scalability हमें refer करता हूँ the ability of software to handle increasing workload or user demands. Next question, which tool is used for managing containerized application and service, that is Kubernetes. Next तो हरे मन रखिए, what is software engineering? Software engineering हमें कहा कोई था the discipline of designing and developing, testing and maintenance of software. Next question asila, what is software prototyping? Software prototyping, the process of creating an early model of software application to test concept and features. Next question, which of the following is an example of an application that performs data analysis and visualization, that is Microsoft Excel. Data analysis and visualization पे हमें Microsoft Excel व्यवहार करता हूँ. What is the software development life cycle बा SDLC हमें कहा कोई तो बतार काम कौन? ये होती the process of planning, creating, testing and deploying software. Next question, which software tool is used for creating and managing virtual machine? आपनकर VMware आपनकर ए जो उत्तर. Next question, what is the version number of a software typically used for? आपनकर version number हमें software typically एटा की enter करता है सी to indicate the release version and track changes over time. Next question, what does software licensing determine? Software licensing अपन determine कहा करता है the terms under which software can be used
एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाइड एमती का आपनकर बहुत गुड़ा क्वेश्चन होची सब क्वेश्चन को आम आलोचना करबा आज क्लास रे नेक्स्ट क्वेश्चन ले आपनको आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग paradigm that emphasizes the uses of logical relationship and interference that is the answer आपनकर logical programming next question आपनकर what does software reliability refers अपन software reliability refer का करता है the likelihood that software will consistently perform its intended function without failure is your answer next question which of the following tool is commonly used for front end web development ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର front web development ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର tool ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ react ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର next question what is the purpose of software configuration management to track and control changes in software development and deployment next question which type of software is designed to assist users in performing routine tasks like file management and system maintenance that is utility software next question what does software performance tuning aim to optimize the efficiency and speed of software operation next question what is agile methodology characterized by in software development आमे agile methodology पूर्व पढ़ी के आस्तिले तारो रिलेटेड आउट क्वेश्चन आसिला iterative development with frequent feedback and collaboration next question आसिला which type of software is used to ensure the security and integrity of data and system that is the security software next question what does end user software refers to software that designed for users used by and end users rather than developers or IT professionals that is the end user software next question what is software scalability the ability of software to handle increased loads or demands by scaling up or out next question which programming language is often used for statistical analysis and data visualization that is R programming next question which of the following tool used for network analysis and monitoring that is OSC next question jiba what is software asset management the process of management and tracking software license and uses within an organization next question what does continuous integration involve in software development a the practice frequent merging code changes into a shared repository next question jiba which software tool is used for creating and managing workflows in a software development that is jira पढ़ी के आस्तिले आमे मो कहितली jira git आपण माने समस्त मने रखंतु what does software quality assurance focus on आपनको ensuring करता है that software meets specified requirements and quality standards next question जीवा next question कौन सी देखिबा which of the following is a common method for managing software dependency in a project that is package manager a is your answer next question आसिला कोन what does software compatibility refers to software आपनकर compatibility refer करता है the ability of software to work correctly with other software and hardware next question आसिला कोन which programming paradigm focuses on the use of function and avoiding changing state or mutable data that is functional programming a is your answer next question what is software localization the process of adapting software to different language and regions a is your answer next question which software development process involves breaking down a project into smaller manageable tasks and delivering them into iteration that is the answer agile development mone rakite important question ta what is software modularity is the design principle of dividing software into distinct self-contained modules next question which tool is commonly used for front end web development to enhance user interface with interactive elements that is jQuery next question what does software documentation include that is manuals user guides technical references related to software next question what is software configuration la kono the process of setting up software to work in a specific environment or with a specific parameter next question which term refers to the process of ensuring that software function correctly in different environment or configuration that is आपनकर कोन हिजबो compatibility testing next question what is software benchmarking the process of measuring the performance and efficiency of a software against specific standards next question which programming language is known for its use in data analysis scientific computing and machine learning that is python mane kithibe a is answer
What does software development involved? Software deployment involved आपनकर कौन हो installing, configuring software for end users or production environments. Next question, which tool is widely used for version control and collaboration in software deployment? Software development. Next तो हमारे ये होची Git. Next question जीवा, what is software debugging? Software debugging, the process of identifying and fixing errors or bugs in software code. Next question, what does software prototyping aim to achieve? ये जो आपनको to create the a primary version of software to test concept and gather feedback. Next question, which of the following is a common programming language used for server side development? That is PHP. What is software usability? Software usability, the easy with which user can learn and effectively use software. Next question, which of the following is a popular database management system? That is MySQL. Next question jiba, what does software version involving? Software versioning involve आपण मानकर कौन है the process assigning version number of software release and tracking change over time. Next question, which software development approach emphasizes rapid delivery and small incremental updates and frequent user feedback? That is the answer, agile development. Next question, what does software architecture involve? Software architecture involve the high level design and structure of software system. Next question, which of the following is an example of cloud computing platform? Cloud computing platform, that is Amazon Web Series Service. Series नुहे आपन Amazon Web Series नहीं किया सिवनी Amazon Web Service, that is AWS. What does software maintenance typically include? Software maintenance typically include fixing bugs, updating features, improving performance and after the initial आपनकर stage हो जोटा की. Next question आसिला कोन देखंतु, what does acronym LAN? एबे हमें LAN ऊपर को जिबा, आपनकर कम्युनिकेशन ऊपर को जिबा, LAN आपनकर LAN man, आपनकर राउटर बस एटी समस्त अंश पढ़िबा. एटी कोन आसे देखंतु, what does the acronym LAN stand for? LAN for local area network. Local area network आपन मानकर B हे जो आंसर. Next question आसिला, what is the primary function of router? To route data packet between different networks. Next question, which protocol is used to send email over the internet? That is कोन protocol? SMTP. SMTP आपनकर को क्वेश्चन आसीला, आपनकर preliminary question आसीला. Next question आसीला कोन, what does the acronym HTTP stands for? आपनकर hypertext transport protocol, that is easier answer. HTTP ର full form. Which layer of the OSI model is responsible for the data encryption and decryption? That is the presentation layer. B is your answer. Next question, what is the main purpose of firewall in a network? Main purpose कौन है जिबो? To protect the network from the unauthorized access. Next question is, which protocol is used for secure communication over a network? That is HTTP. Next question, in networking, what does IP stands for? IP stands for आपनकर internet protocol. Next question is, which device is used to connect a local network to the internet? That is router. Router माध्यम रे आमे कोन करथाउ, local network सहित internet सहित connect करथाउ. What does the acronym DNS stands for? DNS हला domain name system. What is the default port number for HTTP traffic? That is 80. इटा बोलक मन रखिथिबे, 80 is the port number for HTTP traffic. Next question is, which protocol is used to transfer files between computers and or on a network? That is FTP, file transfer protocol जोटा कि हमें कहितो. Next question जिबा, what is the purpose of network address translation जोटा कि NAT कहितो? To hide private IP address from external work. Next question is, which of the following is a method to improve network security? That is using VPN. VPN व्यवहार करंतु. Next question जिबा, what is the purpose of DHCP network? To assign IP address automatically to device. DHCP हमें व्यवहार करता हूँ. Which of the following is an example of wireless network technology? That is Wi-Fi. Wi-Fi हला wireless network technology. Next question is, what does the term bandwidth refer to in networking? That is amount of data can be transmitted in a given time period. Next question is, what is IP address? A unique identifier for a network interface. Which layer of the OSI model is responsible for end-to-end communication and error recovery? That is the transport layer. Transport layer. C is your answer. Next question is, what does VPN stand for in the context of networking? That is virtual private network. A is your answer. The main function of switch in network to connect multiple devices within a network and manage
data traffic, that is answer A. What type of cable is commonly used for Ethernet networking? Important question. Ethernet networking ପାଇଁ twisted pair cable ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. Which protocol is used for secure communication over network specifically for email, that is SSL or TLS? आपन उत्तर डी हिजबो. What is the function of a network hub? Network hub to broadcast data to all device on a network. Next question is which of the following is a protocol used for remote desktop access, that is RDP? Next question, what does the term latency refers to in a networking, that is delay before a transfer data begins? Next question, which protocol is used for resolving domain name to IP address, that is DNS? Next question, what is the purpose of port hardwiring? Port hardwiring to redirect traffic from one IP address to another. What is the maximum length of a Cat5 Ethernet cable for reliable transmission, that is the 100 meter? ये समस्त मन रखिए, क्वेश्चन सब तो गुरुत्वपूर्ण रहिबो. Which layer of the OSI model handles error detection and correction in the data frame, that is data link layer? B is your answer. Next question, what is the primary function of a proxy server? ये कौन है जो आंसर? To act as an intermediary between a client and internet. What is the primary purpose of an IP address? To uniquely identify a device on a network, that is आपको उत्तर ए ही जीवो. Next question जीवा, what does NAT stand for in networking? NAT होचे आपको network address translation. ए ही जो उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन आसिला कोन, which wireless networking standard operates 5 gigahertz frequency and offers high speed, that is 802.11 lakh आपन एसी लाख हबनी एची एसी एटा को आपन करो एक्युमुलेशन. डी आपन उत्तर हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क स्विच? नेटवर्क स्विच को प्राइमरी फंक्शन टू डायरेक्ट डाटा पैकेट्स to appropriate destination device within the network. Next question asila, which protocol is used for transforming files over the internet securely, that is FTPS. Next question, what does the acronym VPN stands for? VPN है virtual private network. एटा repeat हो जाइए question टा. What is the main advantage of using fiber optics cable over copper cables? आपण copper जगह रे fiber optics व्यवहार काहे करथांती? काहे कि ना higher data transmission speed and longer distance. What does the acronym MAC stands for in networking? MAC होची media access control. A is your answer. What protocol is used for retrieving emails from server, that is IMAP? B is your answer. What is the primary function of a network access control list? ACL, that is the answer A. To define permission for network traffic. Next question is what is the term describe the practice of dividing a network into smaller isolated segment for better performance and security, that is VLAN. VLAN कहता. Next question, what does the acronym IPv4 stands for? That is Internet Protocol version 4. D आपन A जो उत्तर. Next question जीवा, which layer of OSI model is responsible for routing data between networks? That is network layer. B is your answer. What does QoS stands for in networking? That is quality of service. QoS. A आपन उत्तर है जो quality of service. What is the purpose of the tracer route command? Tracer route command होचे आपन to trace the path data packets take from source to destination. आपन उत्तर है जीवो A. Next question जीवा, which protocol is used for dynamic IP address allocation? That is DHCP. DHCP हमें पढ़ी के असले पूर्वरु. Which networking devices operate at the data link layer of the OSI model? That is switch. Switch is C is the answer. Next question, what is common method for securing wireless network? That is all of the above using WPA2 encryption, disabling a DHCP, using MAC address filtering. तेणु उत्तर आपनकर D हेगला. Question, what does SSL stand for in the context of internet security? That is sequence socket layer. आपन उत्तर A. Next question जीवा. Next question is what does the acronym FIFO? FIFO आपनकर stands करछि काहाकू fast in out, fast in and fast out. That means answer is A. Next question is which file extension is commonly associated with Microsoft Word document? Microsoft Word document सहित आपनकर doc. What is the main purpose of file compression? To reduce the file size. To reduce the file size को कम करे पई file compression करा जाता है. Next asila data encryption. Data encryption हमें refer करता है कहाकू the process of converting
data into a secure format to prevent unauthorized access. Next question asila, which of the following is a common file format for storing spreadsheet data x.xlxs? निश्चित भाव मन रखिए व्हाट इज द फाइल सिस्टम, the method to store and organize file on a storage device. This is the file system. Which command in Unix and Linux is used to list file in a directory, that is is? First s अपन लिखिबा the first s. Next question jiba, what does the backup refer to in the file management? Backup होउची कोन, creating a copy of file to protect against data loss. Next question sila, what is the file selection is used to remove a file from a directory, that is delete selection है जिवो. Next question जिबा, what does the term data processing encompass? That is to collection, manipulation and analysis of data to produce meaningful information. Next question, which of the following is a common method for organizing files on a computer? That is folder hierarchy. is your answer. Next question, what does the acronym RAM stand for in computing? ये कथा हमें पढ़ी सारचे, random access memory. Next question जिबा, which of the following file format typically used for images? Images पाई आपनको समझते जानते .jpg. Next question जिबा, what is the purpose of the data normalization? To organize data efficiently, to reduce redundancy and improve integrity. That is the answer आपनको A ही जिबो. This is the data normalization. Next question जिबा, which of the following is a file system used by the Windows operating system? That is NTFS system. इस बारे में कथा पढ़ी थिबे. In the context of database, what does SQL stands for? That is structured query language. आपनको उत्तर A. Next question जिबा, what does the defragmentation do to file system? ये होची कोन, it organize fragmented data to improve access speed. A जो आपन उत्तर. Which file format is often used for document storage and sharing? That is PDF. Next question jiba, what is data deduplication? Deduplication ma अर्थ होई जिबा आपन the process of removing duplicate copies of repeating data. आपन repeating data रो जदि duplicate copy रहिछि ताको हमें deduplication करिबा. Next question jiba, what does the term metadata refers? Metadata refer करते हैं data that describe other data. Next question, which command in Windows is used to display or set the file attributes? That is attribute data. आपन उत्तर कोन हिजबो A हिजबो. परवर्ती क्वेश्चन आसिला, what is the purpose of file versioning? File versioning हेला कोन, to maintain different version of a file for tracking changes and recovery. A is your answer. Next question, what does the file system hierarchy refer to? File system hierarchy refer करता है काकू, the organizational structure of directories and files on a storage devices. यही जो उत्तर. Next question सिला, which data processing method involves extracting useful information from large data sets? That is data mining. यही जो आपन को उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन को जीवा. Next question आसिला, what is the main purpose of file index? File index ର purpose कोन होइबो? To speed up the file search and retrieval. Next question सिला, which of the following file format is used for audio files? Audio file पे हमें कोन यूज करथौ? MP3. समस्त जानि छथि किछ असुविधा नै. MP4 हमें वीडियो पई आ ता सहित JPG आपनकर फोटो पई. नेक्स्ट क्वेश्चन सिला, what is the file path? File path हमें कहा कोइथौ? File path is the location of a file within the directory structure of a storage device. एही जो उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन सिला, the purpose of data archiving. Data archiving हमें कहा कोइथौ? To store data that is no longer actively used but is kept for long term preservation. Next question जिबा, which of the following is a common file system used by Mac OS? Mac OS कौन होची? HFS plus, that is C is your answer. Next question जिबा, the data integrity हमें कहा कोइथौ? The accuracy of consistency of data over its life cycle. Next question जिबा, what type of data processing involves real time processing of data as it received? से होची आपन उत्तर real time processing. Next question जिबा, file fragmentation. File fragmentation हमें कहा कोइथौ? The process of breaking a file into smaller pieces for storage. एही जो आपन उत्तर. Next question सिला, which of the following is a method to ensure data security? Data security को हमें data encryption कहिथौ. Next question जिबा, what does the term data transformation? Data transformation हमें कहा कोइथौ? The process of converting data from one format to another. This is the data transformation. Next question आसिला, which file system is commonly used in Linux operating system? Linux operating system रे except for आपनकर एही जो उत्तर.
फाइल हेडर कौन होची आपनकर द सेक्शन एट बिगिनिंग ऑफ ए फाइल दैट कंटेन्स मेटा डाटा अबाउट द फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हाट डज डाटा रेडुडेंसी रेफर कहा करता है ये होची अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा विदिन ए डाटाबेस और ए फाइल सिस्टम। यही जो आपन उत्तर व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइल इंडेक्सिंग आमे कहा कोइताउ टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ फाइल्स फॉर फास्टर सर्च एंड रिट्राइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विथ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड ऑन विंडोज दैट इज .exe आपनकर यही जो उत्तर व्हाट डज डाटा वेयरहाउसिंग आम इनवॉल्व कौन रखी था द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैनेजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल फाइल इनटू वन दैट इज आर्चिविंग उत्तर आपन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द व्हाट डज द डाटा क्लींजिंग इन्वॉल्व डाटा क्लींजिंग आम कहा कहता डाटा क्लींजिंग है द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और रिमूविंग इनएक्यूरेट और irrelevant डाटा। यही जो आपन उत्तर which of the following is a benefit of file compression that is a reduced storage space uses। next question is what does data processing cycle include a collection processing and storage and dissemination of data। यही जो आपन उत्तर। next question is which file system is commonly used in portable USB drive that is FAT2। next question जीवा what does file synchronization involve keeping a files up to date and consistent across multiple devices or location। next question what is a file extension हमें कहा कोई the suffix at the end of the file name that indicates its format जेमते का अपन .exe .ppt .doc doc एमिते अपन नाम देथौ ना that is called file extension। next question बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन सी देखिबा which term refers to the process of converting data into readable format that is data decoding। तापर क्वेश्चन आसिला व्हाट डज बैच प्रोसेसिंग इन्वॉल्व कौन होता है ए प्रोसेसिंग डाटा इन लार्ज ग्रुप और बैचेस रेदर देन वन पीस एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड फॉर सिक्योरिंग फाइल डाटा ड्यूरिंग ट्रांसफर दैट इज आपनकर यूजिंग एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is the correct syntax for main function of C। एबे आमे आसिले C लैंग्वेज पाखो जिबा C++ पढ़िबा एडवांस C लैंग्वेज अछि एवरी सब्जेक्ट रो कंटेंट एवरी सिलेबस रो कंटेंट को मु फिल अप करछि अपन क्लियर करली पढैछि निश्चित भार आपन को समस्त क्लास भलो लागुतो बोली आशा करछि तेनु लाइक कर दियंतु लाइक शेयर करियो जमा भूलौनी। तो ये क्वेश्चन उत्तर कोन हबो व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट सिंटेक्स ऑफ मेन फंक्शन पे आमे करेक्ट सिंटेक्स नहीं था कोन इंट मेन आपन को ई भलिया आंसर हे जिवो ए। परवर्ती क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इन सी रे डिफॉल्ट मेन टाइप हेगला इंट आमे व्यवहार करताउ से बेले आसिला व्हिच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज द printf फंक्शन पाइब स्टैडियो आपन कहता स्टैडियो आपन को .s आप ए उत्तर हे जिवो। हाउ डू यू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल इन सी आपनकर इंटीजर वेरिएबल को सी लैंग्वेज रे केमति का अपन डिक्लेयर करबे इंट नम सेमीकोलन एमति हमें आपन को कहै थाउ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हाट इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल इन सी इनिशियलाइज हमें करिया पई इंट नंबर इक्वल टू 10 एमति आपन नंबर एठु आपन 0 टू इनिशियलाइज करि पारंती बा 10 टू इनिशियलाइज करि पारंती। बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए एक्सप्रेशन 5% 2 इन सी लैंग्वेज जदि आम 5% 2 लिखियो ताले रिजल्ट आपको कौन दबो 1 दबो। निश्चित भाव में समस्त क्वेश्चन मन रखिए व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर ए लॉजिकल एंड इन सी लॉजिकल एंड इन सी रे आम को प्रकार ऑपरेटर व्यवहार करथाउ एबोले एंड आपन को व्यवहार करथाय व्हाट डू यू कमेंट इन ए सिंगल लाइन इन सी केमते आपन लाइन सी रे आपन को सिंगल लाइन ले केमते कमेंट देबे कमेंट दबा पई आपन को एमती दबा को पड़िबो ए जो आपन उत्तर कि डबल स्लैश आपनकर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हाट डज द साइज ऑफ ए ऑपरेटर डू इन सी आपन सी रे ऑपरेटर रो साइज कोन रहइबो साइज रहइबो आपनकर टू रिटर्न द साइज ऑफ डाटा टाइप और वेरिएबल इन बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर इन सी आपनकर scanf आमे व्यवहार करथाउ scanf ए जो उत्तर एई भली आपनकर जदी सी रे कोड देई थाय ताले यार उत्तर कोन आसीबो से भली क्वेश्चन आसी थाय ए क्वेश्चन समस्त आपनको इंपोर्टेंट हिबो 60 इज आंसर व्हिच लूप इन सी एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन ये होची डू व्हाइल लूप आपनकर। परवर्ती क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी अपन सी जो ब्रेक स्टेटमेंट सी रे हमें व्यवहार करथाउ तार पर्पज हला टू एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप और स्विच सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन
कांस्टेंट वैल्यू इन सी हला होची आपनकर कॉन्स्ट आपन व्यवहार करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हाट इज द पर्पस what is the use of the return statement in a function that is a to end the function of a function and optionally return a value how the are arrays declared in c रे आपनकर array केमते डिक्लेयर हिता ई होची आपन उत्तर हे जिवो एमतिका int array जोडा कि स्क्वायर ब्रैकेट भितरे आपन जहां भी नंबर लिखुचंती तापरे सेमीकोलन तो निश्चित हारे आपन एंड रे रहिबो which function is used to determine the length in a string in c string रो व्यवहार आपन strlen ले करिवे strlen निश्चित हारे समस्त जिंस मन रखिबे what is the output of the following code snippet आपन उत्तर हो जिवो यार 2 print a percentage d 10/4 हेले आपन उत्तर कोन हबो 2 हबो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा what do you declare a pointer to an integer in c that is आपन input integer print एटा जो आपन int ptr नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा what is the purpose of the size of the operator in c size of the operator in the c to find the size of variable and data type in bytes next question jiba what does the plus plus operator do in c in the plus plus operator अपन कोन करथाय c रे ये अपन मन को to increment the value by 1 variable by 1 अपन को 1 1 plus हे जिवो तार अर्थ होची plus plus next question jiba which keyword is used to define a new data type in c new data type in c हेला कोन type def next question jiba what is the purpose of the void in keyword c void ro व्यवहार में to specify that function does not return a value or a pointer to anyone next question what does the end operator do in c एबे कहि गसिले logical end next question what is the result of the following code ए कोड रो आप आंसर 25 हे जिवो next question ले कोन आसीला what is the function is used to allocate memory dynamically c रो आपन malloc हे जिवो malloc allocate कराई थाए m allocate एमते पढंतु what is the purpose of the free function in c आपनकर पर्पस रहबो to deallocate memory that was previously allocated dynamically what do you define a function prototype in c that is a is answer return type function name parameter next question which keyword is used to create a new data structure in c is that can hold different types that is struct next question jiba what does the enum keyword define in c enum keyword define in c a set of named integer constant which statement about the switch statement is true in c that is आपन को उत्तर हेजला it allows multiple branches use on the value of expression next question what is the purpose of the continue statement in c that is a answer to skip the current iteration and of a loop and proceed with the next iteration एबले आपनकर आउटे क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट यार उत्तर कोन हे जिवो यार उत्तर आपनकर 5 हबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया ये 5 आपन आंसर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला कोन व्हाट डू यू इंक्लूड ए हेडर फाइल इन सी आपनकर फाइल सी रे कोन फाइल हेडर यूज करंती देखतो हैशटैग include header.h c आपनकर ए उत्तर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन सी टू रेस्ट्रिक्ट द विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल और फंक्शन ऑफ the file where it is declared next question asila what does the typed def keyword do in c typed def keyword आपन कोन करथे defines new data types based on existing one next question jiba which of the following operator is used for bitwise or in c bitwise or in c आपन को एई भले आपन को देखो symbol लो क्वेश्चन आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हाट डू यू डिक्लेयर 2d array in c 2d array हमें c रे केमते डिक्लेयर करथाउ int array स्क्वायर ब्रैकेट दुईटा देकी आपन को नंबर्स लिखिबे तापर सेमीकोलन देबे व्हाट इज द करेक्ट वे टू एसेस द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन ए 2d array रे आपन को वैल्यू ऑफ आपन जोडे की एसेस करिया पे एलिमेंट रो एमती लिखिया जिवा दरकार व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए asset function in c to test assumption and print error message if the assumptions are false next question पुनी गुटे कोड स्निपेट रो क्वेश्चन देला यार आंसर कोन हबो 10 हबो मने कितिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा व्हाट इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द लूप इन सी लूप पई आपण मानकर ए हिजो फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट तापर आपण मानकर ब्रैकेट एंड करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एसेस मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर थ्रू ए पॉइंटर दैट इज द आपनकर एमतिका आपण ए हिजो उत्तर ग्रेटर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा how do you declare the a function that returns a pointer to an integer that is the answer a int function bracket रहिबो आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन जला
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यार आउटपुट आपनकर कोन हे जो बी उत्तर हे जो 14 हे जो आउटपुट व्हिच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज्ड टू सॉर्ट एन एरे इन सी लाइब्रेरी फंक्शन क्यू सॉर्ट आमे कहिता जाकू व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द कोड स्निपेट ए कोड स्निपेट रिजल्ट आपनकर 14 सी हे जिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन सी यूज बूल डाटा टाइप जोटा कि वैलिड न थाई सी रे हाउ डू यू डायनामिकली एलोकेट memory for an array of 10 integers in C 10 integers in C आपण मानको पई integer array malloc जोटा कि m allocated कहूची malloc पड़ी पारंती बा m allocated 10 size of integer एठी देखिबे जहा भी नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा what does the string function do string function कोन करता है returns the length of a string नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which keyword used to define the constant value in C constant value पई const आपण व्यवहार करता हो रिपीट हेगला क्वेश्चन What is the purpose of the volatile keyword in C? Volatile keyword व्यवहार आमे कौन पाई करता हो to indicate that variables value may changes unexpectedly. Next question जिबा What is the correct syntax for defining a macro in C? Macro in C होला होची कोन define macro name value. Next question What is the static value in variable in C? Static variable in C कोन होला a variable whose value is preserved between function calls. Next question ଆସିला which feature of C allows function to call themselves that is the recursion ए ही जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन what does the inline keyword suggest about a function in C inline keyword कोंटा the function should be expanded in a place where it is called next question jiba what is the purpose of the restrict keyword in C that is a to specify that pointer is the only way to access the object it to point to next question what does the type def do in C type def do in C होची आपन उत्तर जो defines a new name for existing data type next question which of the following is true about a union in C आपन कर कोन कहबो allow करिवो different type of data to share the same memory location next question what is the offset of macro used for to get the offset of a members from the start of a structure next question which function is used to dynamically allocate memory for a specified size and initialized it to 0 निश्चित भाव ये कल हक हे जिवो कल लॉक आपण सी allocate ले पढी पारंती बस कल ओ जेमते ही पढोचंती नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा हाउ डू यू डिक्लेयर द ए फंक्शन पॉइंटर इन सी आपण फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर केमते करिवे रिटर्न टाइप एमते लिखिबे फंक्शन पॉइंटर एंड पैरामीटर what is the purpose of size of the operator purpose hela to determine the size of the variable and data types in bytes next question asila kono to what does the long jump function do long jump function kon karta it performs local jump to specified point in the program next question what is the function of the set jump function la to save the current execution context for a letter used by long jump next question what is the purpose of a volatile keyword C volatile keyword हमें C रे व्यवहार करता है कौन पाए to prevent compiler optimization on a variable next question आसिला how do you use a structure in C to create a new data type आपन कर कौन हला गुटे न्यू डाटा टाइप क्रिएट करिया पई कोन प्रकार स्ट्रक्चर व्यवहार हमें करता हूं that is the structure type member 1 type member 2 ए भले आपन का व्यवहार करता है what is the correct syntax to access a member of structure through a pointer that is the pointer एमतिया member लिखिबे next question आसिला which of the following is not a valid storage class in C dynamic storage is not a valid next question आसिला what does the union keyword do in C union keyword do अपन C रे कोन काम करते हैं allow multiple variables of different types to share the same memory location what is the purpose of restrict keyword in C restrict keyword hela to indicate that pointer is the only mean of accessing a particular object which function is used to concatenate two string in C concatenate hela hoche apon extract he jibo extract next question asila how is a function of pointer used in C to hold the address of function and call it indirectly next question asila what is the use of type def in C programming to create an alias for existing data type next question which keyword in is used to declare function that will not return value that is apankar void keyword next question what is the difference between the m allocate and C allocate in C m allocate and C allocate ro hochi apankar an जोटा कि m allocate एवं a allocate
uninitialized memory while C allocate and A allocates zero initialized memory निश्चित भाव एक मन रखिए एटा गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रहिबो परवर्ती क्वेश्चन जिबा what is the purpose of a reallocate function in C reallocate allows you to resize the previously allocated block memory what does the size of operator return to the character data type that is 1 next question jiba how does use the static keyword in a function that is answer to return the value of a local variable between the function calls next question what is the macro in C कौन है जिबा आपनकर a preprocessor directive that defines a code fragment what does a enum keyword define in C that is a set of named integer constant next question which of the following is used to prevent a variable from being optimized out by compiler that is volatile ए जो आपन उत्तर परवर्ती क्वेश्चन how do you declare a variable constant in C that is x equal to constant x equal to 10 ए जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन what is the role of extern in keyword C external value आपन कोन देबे to declare variable or function that is defined in another file what is the purpose of go to statement by to transfer control to a specific level in the code what is the function of pointer in C ro आपनकर a pointer that holds the address of a function what do you define an array function pointer that is the answer आपनकर a हिजबो return type function array and parameter हिजबो what does the offset macro return by the byte offset of a member from the start of a structure a आपनकर उत्तर हबो परवर्ती क्वेश्चन how do you declare a variable that retains its value even after goes out of a scope that is a answer by using the static keyword what is the purpose of the size of operator in a relation to arrays that is to find the total size of the array in bytes next question what is a bit held in C कौन हला a structure member that occupies a specific number of bits next question asila which of the following is correctly declare a structure with a bit field in C that is आपन को उत्तर है जो struct unsigned integer A for unsigned integer B that is 4 next question जिबा what is the output of the following code ए कोड रो आपन को output 30 हो B answer what does the dash attribute dash packed attribute आपन को कोन होला ये होची डायरेक्टिव आपन को जो dash होची आपन को रहला attribute and dash packed directive do in C ये होची आपन को to prevent करिवो padding between the structure member को which of the following features is in exception handling in C that is the set jump or long jump what is the purpose of restrict keyword in function pointer that to optimize the code by informing the compiler that pointer is the only means to access the object which of the following correctly defines a variable length array in C that is a integer array where n is determined in at runtime next question asila how can you pass an array to a function in C that is by passing a pointer to the first element of the array next question what is a volatile variable a variable whose value may change outside the control of the program such as hardware register next question एमती आपनकर स्निपेट देथिले यार उत्तर आपनकर 22 हबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नै सरी गला आपनकर क्वेश्चन आशा करूथि सेशन बहुत भल लागतो शेयर गुटे कर दियंतु लाइक करियो जमा भूलतनी सब्सक्रिप्शन नवा पाई पेड सब्सक्रिप्शन पाई कमेंट सेक्शन में जानतु फोन करि पारंती यार पीडीएफ मध्ये ओनली पेड सब्सक्रिप्शन ग्रुप रे मिलियो धन्यवाद आ जय जगन्नाथ समस्त को।